Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year class with new lecture from chapter 5. I'm your teacher, Mrs. Hadija. Today we will discuss a new topic from network communication, that is communication medium. In our previous lecture, we learned the concept of network communication and we discussed different basic components that are required to make up a network communication. And then we discuss modes of data communication, that is simplex, half duplex, and full duplex. And we also discuss two types of transmission that can happen between different components in network communication. Today we will discuss communication media or communication medium. Communication media, which is plural of word medium, is actually a link, or we can say channel, which provides path to transmit data between devices from one location to another location. These communication medium act as a path, or we can say act as links between different devices which involve in communication network to transfer data from one device to another device. And these medium can vary depending on your capabilities. Either they can transfer data at short distance, or they can transfer data at long distance. They can transfer data through wires, or they can transfer data without wire. We will discuss these different capabilities in next slides. But remember, these all communication media transfer data in analog form, which is also called carrier wave. It means the wave which carries the data from one device to another is called carrier wave, and the signals which are transferred through these media, either they are wired or either they are wireless, they are analog signals. But there are devices on the sending side and the receiving side which converts these signals into digital form. What I'm saying, the signals which are being processed in a computer system, we already know that they are digital signals in the form of 1 0 or a stream of 1 and 0. But when they are transferred through analog or through communication medium, they are converted into analog form. This can be done in two ways. How? We know that there are two properties of analog signals. One is amplitude and second one is their frequency. By varying or by changing the amplitude of a wave, we can transfer data. If this is a normal low amplitude wave, then by doing it or by changing it into higher amplitude wave, we can transfer 1 bit. Or if there is a low amplitude wave, then it will transfer 0 bit, or sometimes there will be no amplitude, that we will see in the next slide. What I'm saying, कि जो normal analog wave है, it consists two properties. One is called amplitude and second called frequency. By varying these properties, or by making change in these properties, we can transmit data, the digital data which is required to transmit from one device to another device. अब ये डेटा कैसे ट्रांसफर होता है? अगर हम किसी वेव का एम्पलीट्यूड जो वो चेंज कर दें, अगर वो लो एम्पलीट्यूड होगा तो it will represent 0 bit. If it will a higher amplitude or longer amplitude, high amplitude, then it will transmit 1 bit. And sometimes there is no amplitude against 0 bit. On the other hand, by changing frequency, we can also transmit data using these mediums. Frequency
आपको पता होगा frequency means how number of times a wave can change itself in a specific time period. और अगर एक wave अपने आप को ज़्यादा दफ़ा change करेगी in a specific time period in 1 second, let's see, then it we can call it that it is transmitting 1 bit. On the other hand, अगर जो है number of repetition कम है in a specific time, then we call it 0 bit. Here you can see that in amplitude modulation, if there is a high amplitude, it represents 1 bit. But if there is no amplitude, or sometimes there is a low amplitude, or we can say the length of the or height of the amplitude is low, then it will represent 0 bit. This is also called coding, and different coding schemes or different coding algorithms are used on the divided on the devices जो actually ये conversion कर रही होती है. जो normal आपकी carrier wave है, जो analog wave है, वो उसको मॉड्यूलेट करके कैसे 1 और 0 को रिप्रेजेंट करेंगी. दिस इज कॉल्ड कोडिंग. और डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स जो हैं डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती हैं ताकि वो हाई एम्पलीट्यूड के थ्रू जो है 1 बिट को रिप्रेजेंट कर सकें, और जब 0 बिट ट्रांसफर होनी है मीडियम को यूज करके तो उसको लो एम्पलीट्यूड या नो एम्पलीट्यूड, समटाइम कोई एम्पलीट्यूड शो ही नहीं होता, उसके जरिए से डेटा को कन्वर्ट करें या ट्रांसफर करें. इसको कोडिंग कहा जाता है. On the other hand, if a wave will repeat itself more number of time, it will represent 1 bit. And on the other hand, if we have to transmit 0 bit, then the wave will repeat it less number of time. So one of the method can be used to transfer digital data through mediums or in the form of analog signals. There's another method which is called phase shift, which you learn in your next classes. Basically, communication medium is of two type. One is called guided communication medium, another is called unguided communication medium. There are 4 different types that we will discuss of guided communication medium. That is telephone cable, twisted pair cable, coaxial cables, and fiber optic cable. On the other hand, we will discuss 2 different types of unguided communication medium. That is microwave medium and satellite medium. Right. First, we are going to discuss guided communication medium. Guided communication medium, which actually use a physical fire or physical path to transfer data from one device to another. They are called guided medium. It means there must be a physical wire or a cable to transfer data through a specific path from sender to receiver. Then it will be termed as or known as guided communication medium. There are different types of guided medium that are used to transfer data between computers and different other components which are part of network communication using wires and cables. For example, telephone lines, twisted pair cables, coaxial cables, and fiber optic cables. The first type of communication medium that I'm going to discuss is telephone cables, and one of the old and we can say traditional method to transfer data, especially on telephone conversation or voice data from one place to another, is telephone cables. And these telephone cables then also used to transfer digital data as well by putting modems on both sides. ठीक है, जब इन्हीं टेलीफोन लाइंस को यूज करके डिजिटल डेटा ट्रांसफर किया गया तो उसके लिए क्या लगाए गए मॉडेम्स, सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी. और उन मॉडेम्स का काम क्या था, जो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डेटा होता था उसको कन्वर्ट करता था किसमें, एनालॉग में, बिफोर पुटिंग इट ऑन द केबल. और जो रिसीविंग साइड पे मॉडेम होता है वो क्या करता है कि वापस उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है बिफोर प्लेसिंग इट इनटू द कंप्यूटर. और फायदा क्या है टेलीफोन लाइंस को यूज करने का, वो ये कि ऑलरेडी चूंकि टेलीफोन नेटवर्क जो है उसकी लाइंस किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद होती हैं. जब कोई कंट्री डेवलप होता है तो उसके अंदर टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ऑलरेडी
डली हुई होती हैं, सो किसी भी एक नए यूजर को उसके अंदर ऐड करना आसान होता है। इंस्टेड ऑफ अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करके एक नेटवर्क बनाएंगे तो कंपनीज को एक नए सिरे से वो लाइंस बिछानी पड़ेंगी। इसके बजाय अगर कोई टेलीफोन लाइन को यूज करके नेटवर्क या डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए तो ये इन लाइंस को नए सिरे से बिछाने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री। Right, I have already told you there must be two modems to transfer data using these telephone lines, and this there must be a sending modem जो actually क्या करता है, digital data को convert करता है analog signals में, और using different through different what we can say antennas, this data is reached at the receiving side, और वहां पे जो receiving modem है वो वापस इस digital signal को, इस analog signal को convert कर देता है किसमें, digital signal में। तो इस तरह से हम इन टेलीफोन लाइंस को डिजिटल सिग्नल सेंड करने के लिए भी या कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं बहुत अरसे से, राइट। बट द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दीज लाइंस दैट दे प्रोवाइड वेरी स्लो स्पीड। अगर टिपिकल मॉडेम की बात की जाए अब लेकिन इसको इम्प्रूव किया गया है। न्यू लाइंस आर spread out all over the country, और इसके अलावा जो मॉडेम्स हैं वो भी डिफरेंट स्पीड्स के साथ जो हैं अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सो द स्पीड इज मच बेटर देन द प्रीवियस स्पीड दैट वी वर गेटिंग। Second type of guided medium that is commonly used is the coaxial cables. Coaxial cables is also used for long distance communication, and they are one of the cheap method to send or to transmit data over long distance, and their speed is much better than telephone lines, that is 10 to 100 megabit per second. So they provide faster speed at cheap price as compared to fiber optics that we are going to discuss next. But one of the drawback, or we can say the disadvantage of coaxial cable, of using coaxial cables over a long distance communication is data loss or signal loss. And the reason is there the base or internal part which is made up of copper. जो टेलीफोन लाइन है वो भी, उसका भी जो इंटरनल पार्ट है वो भी कॉपर का है, ठीक है। जो कोएक्सियल केबल है उसका भी जो इनर पार्ट है वो क्या है, कॉपर है। अब कॉपर जहां पे भी यूज होगी और हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ या हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जब भी डेटा सेंड करने की कोशिश करेंगे तो चूंकि ये जो वायर मीडियम्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली ट्रांसफर कर रही होती हैं, तो डेटा लॉस के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जब हम फाइबर ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे कॉपर वायर की जगह कोई और एज बेस यूज हो रहा है, तो देयर इज लेस चांस ऑफ डेटा लॉस। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द कोएक्सियल केबल, the base or inner part which is used to transfer data is a copper, and then there are two types of coatings on the copper wire. One is called insulation and second is called copper mesh. These both coatings are used or to protect the electromagnetic waves which can alter the data or which can affect the inner wire, ठीक है। और ये दोनों किस्म की जो कोटिंग्स हैं, इंसुलेशन का पर्पस ये होता है कि जो बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जहां जहां ये तार जो है बिछाई गई है और कोई और वायर अगर वहां से गुजर रही है या किसी और रीजन से जो इंटरनल वायर के ऊपर कोई चीज अफेक्ट ना करे, उसके लिए ये दो तरह की कोटिंग इस कोएक्सियल केबल के ऊपर की जाती है। और इससे फायदा क्या होता है कि डिस्टॉर्शन के बगैर, डिस्टॉर्शन मींस ऑल्टरेशन के बगैर और विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल जो है वो डेटा ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टॉप मोस्ट लेयर है इट इज यूजुअली अ प्लास्टिक जो एक्चुअली इनर साइड की कोटिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद होती है कोएक्सियल केबल्स के ऊपर। And I also told you that they are made up of copper wires just like telephone wires. Secondly, if there is a single core
coaxial cable, then there will be only a single copper wire, but as compared to a multi-core coaxial cable, there will be more than one channels or more than one telephone wires which are packed together, and they will transfer more data as compared to a single core coaxial cable. So different types of coaxial cables can be produced or can be manufactured from the companies depending on the requirement कि किस business को किस किस्म की requirement है, और अगर cheap और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देन यूजुअली दे आर they provided a single core coaxial cable which is commonly used. Otherwise, for faster speed and for good accuracy, a multi-core coaxial cables can be provided to a business depending on their requirement. The next type of communication medium which is used is twisted pair cables. As compared to telephone lines and twisted pair cables, here two copper wires with shield or with plastic coating are twisted together, and it will protect the outside interference more, or we can say the electromagnetic waves, outer electromagnetic waves will not affect on the inner side of electromagnetic waves. And for connection, both the wires are used, और जहाँ पे हम इनको प्लग इन करते हैं या आखिर में कनेक्ट करते हैं, दिस कनेक्टर इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, और एक स्पेशल मैकेनिज्म को यूज करके ये वायर्स जो हैं इन कनेक्टर्स के अंदर प्लग इन, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा थिक शो हो रही है, अदरवाइज ये इतनी थिक होती नहीं, इनके अंदर होती कॉपर वायर ही है, लेकिन इसके एंड पे एक लगाया जाता है कनेक्टर विच इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, और देन दिस कनेक्टर इज प्लग्ड इनटू ईथरनेट कार्ड विच इज आल्सो कॉल्ड NIC card. And Ethernet card, we also discussed it in our previous chapter, is used to connect two computers on a networking. And जो Ethernet card है उसका purpose क्या होता है, जो sound card मौजूद होता है या modem card होता है, तो Ethernet card का purpose क्या होता है कि दो computers को अगर हमने connect करना है आपस में, तो उसके लिए Ethernet card use होता है. तो this connector will help to plug in the twisted pair cable into Ethernet card. There are two types of twisted pair cables. One is called shielded twisted pair cable. Another one is called unshielded twisted pair cable. Shielded twisted pair cables are covered with one more element, we can say with extra coating or covering as compared to shield twisted pair cables, and this is on the requirement. कुछ companies चूंकि long ज़्यादा long कहना चाहिए अरसे के लिए वायर्स को बिछाना चाहती हैं, तो क्या करती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है there must be extra some covering to protect the inner twisted pair cables. ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कोटिंग या कवरिंग के साथ जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स बनवाती हैं, दे आर कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. ऑन द अदर हैंड जो कॉमन स्टैंडर्ड है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, UTP केबल्स कहलाती हैं. नॉर्मली जो नेटवर्किंग के अंदर यूज हो रही होती हैं दे आर UTP और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ठीक है, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है as compared to shielded twisted pair cables. They are used, both are used for short distance communication. जैसे कि हम अगर हमें एक कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, या यूनिवर्सिटी के अंदर लैब के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, या किसी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे में कनेक्ट करना है, then twisted pair cables are used. They are not used for long distance communication like coaxial cables and telephone lines, because they cannot transmit data after a specific range, but they transfer data at much higher speed as compared to coaxial cables. Their speed starts from 100 megabit per second to 1000 bit megabit
per second. जो speed है actually Ethernet card के ऊपर भी depend कर रही होती है. Otherwise, these cables, as they are used in office in a small location, so they are faster in speed. The next guided medium that I'm going to discuss is fiber optic cables. Fiber optic cables is actually new technology. We cannot say new, it is now old one, but it is it has replaced the traditional coaxial cables and telephone lines, long distance communication. Especially the private companies do not spread out copper wires, but they prefer the fiber optic cables. And why they prefer fiber optic cables? Because the fiber optic cables are made up of transparent material, which is usually a glass through which data can be transferred in the light waves or in the form of light waves, as compared to electromagnetic waves, which are slow to transfer data. And the light waves has high speed, so the cables which consist of transparent material, and the transparent material is very fine and is very smooth and small, just like our hairs. You can imagine your hairs are very thin, and there are thousands of such hair-like strands are together in a single wire. और ये इतने फाइन होते हैं और इतने लाइट वेव होते हैं, जो ओवरऑल जो फाइबर ऑप्टिक केबल का जो वेट होता है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर कॉपर वायर को यूज करके उसी लेंथ की केबल बनाई जाए. इट विल बी हैवी केबल और उसका वेट भी ज्यादा होगा. अब इनके अंदर चूंकि बहुत ही फाइन हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, तो इनका जो वेट होता है वो भी कम होता है. सेकेंडली दे ट्रांसफर्स डेटा इन लाइट वेव्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो दे आर मच फास्टर देन द टिपिकल copper wires like coaxial cables and telephone wires. If we talk about the structure, you can find two types of structure on the internet. The basic structure includes the core or base, which is usually fine strands. जो मैंने आपको बताया copper wire की जगह क्या होंगी, fine strands होंगी. But there will be thousands of fine strands in a wire, but they are very, very fine. They are very light in weight, so they can be packed up into a single wire. Then there will be a layer which is called cladding, and cladding का जो purpose होता है वो protect करना होता है या cover up करना होता है जो main core होती है उसको, and it is made up of plastic, right? Then there will be first coating which is called primary buffer or coating, और ये plastic की है, ठीक है. और इसका पर्पस क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या कोई और वेव्स हैं जो पास से गुजर रही हैं उनसे इंटरनल कोर को प्रोटेक्ट करना. देन देयर इज अ स्ट्रेंथनिंग फाइबर मटेरियल which is part of some fiber optics cables, and sometimes you don't find it in the basic structure. लेकिन इसका पर्पस क्या होता है कि ये इसको एक मजबूती देती है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या देखा कि मल्टीपल वायर्स होती हैं, तो देयर मस्ट बी अ शील्ड के जो इन सबको कंबाइन करके रखेगी. देन द फाइनल और द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड जैकेट, और इसको सेकेंडरी बफर भी कहा जाता है, जो एक्चुअली इन सबको इकट्ठा करके रखती है, और ये प्लास्टिक की टॉप मोस्ट होती है. और इसमें जो बफर है जो है उसका बेसिकली काम ये होता है, चाहे वो ये बफर है कि जो क्लैडिंग के ऊपर है, और चाहे वो जो फाइनल बफर है जिसको जैकेट कहा जाता है, बेसिकली का काम क्या होता है, जो फिजिकल डैमेज है उससे बचाया जाए इंटरनल कोर को भी, और जो एक फाइबर की स्ट्रेंथनिंग लेयर मौजूद है इनको जो फिजिकल डैमेज है उससे बचाया जाए. ये जब समटाइम्स जब फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स बिछाई जाती हैं तो ज़ाहिर वो बहुत अरसे तक, कई सालों तक जो है वो बिछी रहती हैं, तो जो फिजिकल circumstances होते हैं, इट कैन बी रेन, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, ताकि जो इंटरनल कोर को उस फिजिकल डैमेज से बचाया जाए. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर व्हिच कैन प्रोटेक्ट द वायर फिजिकली, राइट. We have all discussed जो स्ट्रेंथनिंग फाइबर है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो इंटरनल बेस होती है उसको,
और जो टॉप मोस्ट जैकेट है वो एक्चुअली जिसके नीचे की लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द फिजिकल डैमेज. Right. If we talk about different features or different capabilities of fiber optic cables, then their main advantage is less weight, as I already discussed, as the inner core is very fine strands or very lightweight strands like your hair. And the second advantage is that as they transfer data in light waves, so speed is much better than the typical copper wires. Secondly, as there are number of buffer coatings on inside the wire, so it will reduce noise. Noise means जो distortion होती है. Noise का मतलब होता है कि जो कोई और electromagnetic waves हैं या कोई और waves हैं वो जो affect करें, जिसकी वजह से आपके data loss होने का या जो data के जो alteration होती है उसके आने का chance होता है, ठीक है, वो कम होता है. It is just because of the multiple layers, protection layers of the fiber optic cables. And secondly, it is the fourth advantage that the fiber optic cables can has the ability to transfer data both analog and digital form. It means जो modem होता है sending और receiving side पे, उसके अंदर ये capability होती है. जो medium है ये actually medium के तौर पे act हो रहा है. तो जो modem है अगर वो digital data ही transfer कर देता है as compared to converting it into analog form, तो इस medium के अंदर fiber optic medium के अंदर ये capability है कि उस digital data को transfer कर सके या कहना चाहिए कि उसको रिसीविंग साइड के ऊपर एज इट इज ट्रांसफर कर सके. सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स एज कंपेयर टू टिपिकल कॉपर वायर्स, बट देयर ड्रॉबैक इज देयर कॉस्ट. देयर जो इनकी बनाने की कॉस्ट है और देन इनको बिछाने की जो कॉस्ट है, इट इज मच greater than the typical copper wires. ठीक है. Normally they are used for long distance communication across the cities and even across the countries. ये जो हमारे country को दूसरे country के computer के साथ connect करने के लिए भी फिलहाल use की जा रही है बहुत पहले से. दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड इट इज लेड अंडर द ओशन. ठीक है, जमीन के अंदर से और देन ओशन के अंदर से जो है ये हमारा डेटा जो है बाकी कंट्रीज के कंप्यूटर्स तक लेके जा रही है. आप लोगों ने अक्सर कभी न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि किसी शार्क ने जो है वो फाइबर केबल को जो है कहीं से जो है वो काट दिया है, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन फॉर टाइम बिंग हमारी कंट्री के अंदर रुक जाता है और देन जाके जो है उसको रिपेयर किया जाता है. सो दिस केबल इज नॉर्मली यूज्ड टू सेंड डेटा अक्रॉस द कंट्री. और अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपने इंटरनेट कनेक्शंस के लिए भी इसको यूज करी, जैसे कि नियाटेल है, वो टिपिकल जो कोएक्सियल केबल है उसकी जगह फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज कर रही हैं फॉर ट्रांसफरिंग हाई स्पीड डेटा without loss and distortion. लेकिन on the other hand it cost much more than the typical wire, और जो consumer या user है उसको cost ज़्यादा देनी पड़ती है. So that's all from today's lecture. I hope you get the concept of transmission medium. Today we discussed different type of guided medium. What you have to do, you have to read the content that we learned today and you have to underline important points, or important points आपको help करेंगे for your MCQs and for clearing your concept as well. Next, you have to submit assignment, and the assignment is that you have to write down 3 most important features of each guided medium. और आपने assignment करनी कैसे है कि आपने वो 3 फीचर्स लिखने हैं जो एक दूसरे से कंट्रास्ट में भी लिखे जा सकें. क्योंकि अगर आपको कहीं पेपर में या टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी 2 गाइडेड मीडियम को डिस्कस करने को कहा जाता है, तो उसका फायदा ये होगा कि आप उन्हीं 3 पॉइंट्स को इन कंपैरिजन लिख सकते हो. अब आप इसको हेडिंग
के थ्रू भी लिख सकते हो. लाइक द फर्स्ट स्टेप विल बी द स्ट्रक्चर के, यहाँ जो इनर कोर है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में क्या है, वो कोएक्सियल केबल में क्या है, वो टेलीफोन लाइन में क्या है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर क्या है. सेकंड कैन बी द डिस्टेंस कवर. ठीक है, फिर आपने इसमें बताना है कि कौन सी केबल कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है. अगर आपकी बुक के अंदर जो है वो नहीं गिवन है, यू कैन फाइंड द एग्जैक्टली रेंज फ्रॉम द इंटरनेट. अब ये जरूरी नहीं है एट दिस लेवल कि आप सिर्फ बुक का ही कंटेंट लिखो. आप इंटरनेट से सर्च करके आप उसको शॉर्ट करके लिखो, एक ही सेंटेंस में लिखो, बट यू कैन राइट द डिस्टेंस कवर बाय कोएक्सियल केबल इज लेट्स सी लॉन्ग डिस्टेंस, और आगे आप डिस्टेंस की रेंज भी लिख सकते हो. The third point that you can write down the speed, और आपको एग्जैक्टली स्पीड भी इंटरनेट के ऊपर से मिल जाएगी. कुछ केबल्स की स्पीड आपकी बुक के अंदर गिवन है, जिनकी नहीं गिवन आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो. एंड देन यू कैन राइट डाउन अबाउट द कॉस्ट. ठीक है, अब यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एवरी गाइडेड मीडियम. लेकिन आपने करना क्या है कि पॉइंट्स बना के लिखने, और इस तरह से लिखने अगर आपको 2 केबल्स का कंपैरिजन आ जाए तो आपको अलग से वो पॉइंट्स ना लिखने पड़े. That's all from today's lecture. I hope you have get the concept of guided medium. We will discuss unguided medium in your next lecture.